So let's start with today's class. Brachial plexus. Very interesting topic. Most important topic of upper limb. Why it is important? Because all the muscles of the upper limb, they are supplied by the branches coming from the brachial plexus. Okay. Now general classes have been covered. Now what do you understand by the term plexus? ये मेरी रियल आवाज नहीं है ना? What do you understand by the term plexus? Yes, network of what? Nerves. तो अब plexus और भी आगे पढ़ेंगे, ठीक है? There are cervical plexus, brachial plexus is derived from the cervical nerves only. Then lumbar plexus, lumbosacral plexus. कहीं ना कहीं हमें बॉडी में plexus की जरूरत तब पड़ती है जब हमें एक मसल मास को सप्लाई की जरूरत है, नर्व सप्लाई की, मस्कुलेचर को. तो यहाँ पे हमें जरूरत है पूरे अपर लिम्ब को सप्लाई करने के लिए. तो सर्वाइकल नर्व्स से बनता है ये ब्रेकियल प्लेक्सस फ्रॉम दी इंटीरियर डिवीजन और इंटीरियर प्राइमरी रमाए ऑफ C5 to T1. C5, C6, C7, C8 and T1 forms brachial plexus. तो थोड़ा सा और पीछे जाते हैं. स्पाइनल नर्व कैसे फॉर्म होती है? नर्वस सिस्टम में आपने पढ़ा है स्पाइनल नर्व कैसे फॉर्म होती है, कैसे फॉर्म होती है. तो नर्व रूट्स अराइज करते हैं, ठीक है. दे आर डॉर्सल रूट एंड वेंट्रल रूट्स. डॉर्सल रूट्स आर सेंसरी, वेंट्रल रूटलेट्स, these are motor. Now both of these combine, unite and form a single spinal nerve. Okay, they are paired, right and left spinal nerves. Now again spinal nerve, it will again divide into anterior division and a posterior division, anterior ramus and a posterior ramus. Now from where spinal nerve comes out? It comes out from the intervertebral foramen. Okay, so it divides into anterior and posterior or ventral and dorsal ramus. तो ये जो भी plexus हम पढ़ेंगे, these are formed by the ventral ramus or anterior division. So ventral rami of spinal nerve C5, C6, C7, C8 and T1 form brachial plexus. Okay? And branches of derived from this plexus supplies the skin and musculature of the upper limb. Now sometimes there may be contribution from the C4, contribution from C5 may be less, and contribution from T1 may be absent. So that kind of brachial plexus is known as prefixed brachial plexus. जहाँ पे एक division पहले वो derive कर रहा है, यानी कि C4 भी participate कर रही है, तो उसको हम बोलेंगे prefixed brachial plexus. And sometimes there may be contribution from the T2 and contribution from T1 is less. Then this kind of brachial plexus is known as post-fixed brachial plexus. ठीक है? Now brachial plexus, it starts from the roots. हमने बोला ventral ramus of C5, C6, C7, C8, T1. So पहले ये जो start हो रहा है, the starting point जहाँ से arise कर रहा है, that is known as the root. ठीक है? Roots of C5, C6, C7, C8, T1 form brachial plexus. Then these roots combine. The roots of C5, C6 combine and form trunk. ठीक है? C7 forms C5, C6 forms the upper trunk. Then C7 forms the middle trunk, and the roots of C8 and T1 forms the lower trunk. So three trunks are formed: upper, middle, and lower trunk. Then after that, each of these trunks divides into again anterior and posterior division, ventral and dorsal divisions. Upper trunk, middle trunk and lower trunk divides into anterior and posterior division. Then again these divisions, they combine. For example, anterior division of upper and the middle trunk, they will combine and form the lateral cord.
Anterior division of the lower trunk forms a medial cord, and posterior division of the upper, middle, and the lower trunk forms the posterior cord. So 3 cords are formed: lateral, medial, and posterior cords. Then again each of these cords gives branches. So you can remember this formation as RTDC की bus. R for roots, T for trunks, D for division, and RTDC, C for cords, and B for bus के लिए B for branches. ठीक है? So what is the location of the brachial plexus? It is present in the posterior triangle of the neck. Firstly, it is above the clavicle. Root part is above the clavicle, then it's behind the clavicle, and then it is below the clavicle, and then in axilla it gives off the branches. So its relation is also important with the axillary artery. Okay, axillary artery cover हो चुका है. तो उसमें भी आपने रिलेशनशिप देखा होगा ब्रेकियल प्लेक्सस के कॉर्ड्स का, कि पहले वो कैसे उसके पोस्टीरियर रहता है, फिर लैटरल रहता है, फिर अगेन 2 रूट्स जो होते हैं उसके बीच में रन करती है एक्सिलरी आर्टरी. ठीक है, सो एक्सिला के अंदर इट गिव्स ऑफ ब्रांचेस, कॉर्ड्स. सो प्लेक्सस इज अ नेटवर्क ऑफ नर्व्स. इतना समझ में आ गया आपको फॉर्मेशन क्या है क्या नहीं है? समझ में आया सबको? सो इट्स अ प्लेक्सस ऑफ नर्व. It is found in the neck and the axilla region, formed by the ventral rami of C5 to C8 and T1. Now formation you have to remember C5, C8, T1. ठीक है, अब ये हमेशा याद रखना है कि ब्रेकियल प्लेक्सस का रूट क्या है, फ्रॉम C5 to T1. ठीक है, so these are the formations. First there will be the roots जहाँ से वो arise हो रहा है, then roots will form trunks, trunks will divide into divisions, divisions then will form, combine and form cords, and cords will give branches. There are also branches coming out from the roots also and trunks also. जैसे roots हैं तो roots में से भी branches आएंगी, particular muscle को supply करेंगी, trunks में से branches आएंगी, supply करेंगी, and then cords से branches तो है ही. सो वेंट्रल रेमिस, डॉर्सल रेमिस क्या है, तो ये मैंने एक्सप्लेन किया आपको. ठीक है, रूटलेट्स होते हैं, स्पाइनल कॉर्ड्स अराइज फ्रॉम दी रूटलेट्स, 10 to 20 रूटलेट्स. दे विल कंबाइन एंड फॉर्म सिंगल स्पाइनल, एंड अगेन इट विल डिवाइड इनटू इंटीरियर एंड पोस्टीरियर रेमिस. नाउ पार्ट्स ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सस जो मैंने आपको न्यूमोनिक बताया, RTDC की बस. इट कैन ऑल्सो बी रिमेम्बर रियली टायर्ड, ड्रिंक कॉफी बडी. Where R stands for the roots, ventral ramus, T for trunks, D for division, C for cords, and B for branches. Coffee पिया सबने? So what is prefix brachial plexus? Where contribution from C4 is more, it is present, and from T1 it is reduced, and from T2 it is obviously it is absent. Postfix brachial plexus, contribution from T2 is more, and from C4 it is absent, and from C5 it is reduced. Now supraclavicular part, the part which is above the clavicle, are the root and the trunks. Infraclavicular part of the brachial plexus, below the clavicle, are the cords and the branches. And where these will be applied, will be applied when the question will be asked what are the supraclavicular branches of brachial plexus, then you have to answer the branches of roots and trunk. When the question is asked what are the infraclavicular branches, basically MCQ questions will be asked. Infraclavicular part, so you have to mention the branches of the cords. Then divisions जो है इसका relation, it is behind the clavicle. This is how the brachial plexus runs from the neck region till the axilla. Okay. तो हमने जो डिसेक्शन में अभी पेक्टोरल रीजन कर लिया है, एक्सिलरी आर्टरी एक्सपोज करेंगे, और उसके साथ में अब जो नेक्स्ट स्टेप रहेगा दैट विल बी टू डिसेक्ट ब्रेकियल प्लेक्सस. नाउ पिक्टोरियल डायग्राम ऑफ फॉर्मेशंस ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस. ये जैसे जैसे फॉर्म हो रहा है, यू जस्ट स्टार्ट ड्राइंग विद मी, ताकि आपको एक हैबिट डेवलप होगा और ये हमेशा आपको याद रहेगा
This is the most important topic of this volume. Now you have all people know that it arises from the ventral rami. Okay. Then ventral rami of what? Spinal nerve C5, C6, C7, C8, and T1. Okay. Now roots of C5, C6 depicted in the red color. They will form upper trunk. C7 single, it will form middle trunk. C8 and T1, they will combine and they will form lower trunk. So three trunks are formed: upper, middle, and lower. Very interesting topic. Again, इतना कर लिया सबने? Very easy. You have to just be little bit quick. Okay. C5, C6 upper trunk, C7 middle trunk, C8 T1. इसका significance क्या है? बाद में जो आप ये रूट्स बताते हैं नर्व्स की, रूट वैल्यू, वो रूट वैल्यू एक्चुअली क्या है कि कौन सा सेगमेंट स्पाइनल नर्व का वहां से कंट्रीब्यूट कर रहा है. तो जब हम अभी ब्रांचेस पढ़ेंगे ना, तो आप अपने आप ही यू विल बी एबल टू टेल कि इसमें कौन कौन सा कंट्रीब्यूशन आ रहा है किस किस का. ठीक है. तो कंट्रीब्यूशन एक्चुअली इज कमिंग फ्रॉम द पर्टिकुलर स्पाइनल सेगमेंट, upper, middle trunk, and lower trunk. Now trunks split to form divisions in the neck. Behind the clavicle, there will be anterior and posterior division of upper, middle, and lower. तो जहाँ पे आपने उस डायग्राम को ही आप कंटिन्यू करें जो आपने ड्रॉ किया है, उसके आगे you have to draw these two again, these division. If you have different color, you can use different color, anterior and posterior division. Each of the trunk will divide again into anterior and posterior or ventral and dorsal. ये सेम कलर, पोस्टीरियर यहाँ पे हमने ऑरेंज कलर यूज किया और इंटीरियर के लिए ग्रीन कलर यूज किया है. सो इंटीरियर डिविजन ऑफ अपर एंड मिडिल trunk will combine and form lateral cord. That means contribution from C5, C6 and C7. Interior division of upper and middle trunk combine and form lateral cord. Then anterior division of lower trunk will form medial cord, and posterior division of upper, middle and lower trunk, they all will combine and they will form posterior cord. So medial cord जो है इसका contribution is coming from C8, C1. पोस्टीरियर कॉर्ड का कंट्रीब्यूशन सबसे है C5 से लेके T1 तक, और लेटरल कॉर्ड C5, C6, C7. ठीक है. सो लेटरल कॉर्ड, anterior division of upper in the middle, then medial cord from the anterior division of lower and posterior cord from all the three divisions के posterior part से. Now lateral cord, lateral cord, it will, the important branch over here is musculocutaneous nerve. Musculocutaneous, lateral pectoral, and lateral root of median nerve. These are the three branches of lateral cord.
musculocutaneous, lateral pectoral, lateral root of median, lateral root of median nerve. Now musculocutaneous जो है, this is an important nerve which supplies the interior compartment of arm. So you can write interior of arm. जहाँ पे supply देती है, it supplies muscles of interior compartment, musculocutaneous. Over here only some important branches have been depicted. From the medial cord, you can use the mnemonic M for you. M for you. Now M here stands for medial cutaneous nerve of arm, medial cutaneous nerve of forearm, medial cutaneous nerve of arm. You have to write the name of these branches. Medial cutaneous nerve of arm, medial cutaneous nerve of forearm, medial root of median nerve, medial root of the median nerve, medial pectoral nerve, and U stands for ulnar nerve. Medial cutaneous nerve of arm, medial cutaneous nerve of forearm, medial root of median nerve, medial pectoral nerve. So M4 and U here stands for ulnar. अब ये जैसे M शेप में बना है ऐसे ही कैडेवर में भी आपको ये M दिखेगा और मीडियन नर्व जो है वो फॉर्म होगी by the combination of these two roots, from the lateral root of the median and from the medial root of the median nerve. ठीक है, यानी कि यहाँ से जो ब्रांच आ रहा है medial root of the median और यहाँ से ब्रांच आ रहा है lateral root of the median. Both of them will combine and will form median nerve. और ये M शेप में ऐसे ही नजर आएगा, दोनों कॉर्ड साइड में होंगे, बीच में आर्टरी रहेगा और ऐसे M बनता हुआ नजर आएगा और दोनों के लेटरल कॉर्ड एंड मीडियल कॉर्ड विल कंबाइन एंड दे विल फॉर्म मीडियन नर्व. तो रूट वैल्यू उसमें सब इन्वॉल्व हो गई मीडियन के अंदर. अल्नर के अंदर रूट वैल्यू C7 C8 T1 है बिकॉज देयर इज ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम C7. ठीक है, बिकॉज बट हम ये पूछ सकते हैं कि मीडियल कॉर्ड से आ रहा है तो वाई C7. देयर आर कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम C7 एज वेल. दैट इज वाई रूट वैल्यू ऑफ अल्नर नर्व इज C7 C8 एंड T1. बाकी ऊपर मस्कुलोक्यूटेनियस C5 C6 C7. Lateral pectoral and medial pectoral you have already studied in which region. इसको सप्लाई करते हैं, medial pectoral supplies pectoralis major and pectoralis minor. Lateral pectoral supplies pectoralis major. Now the last one is posterior cord. The important nerve, thickest nerve in the brachial plexus is radial nerve, which is the branch of posterior cord. Okay. Then axillary nerve. For this you can also use mnemonic ulnar. ULNAR, ulnar. U stands for upper subscapular. U stands for upper subscapular.
L stands for lower subscapular. Upper subscapular U. L के लिए अपना lower subscapular. N stands for nerve to latissimus dorsi. N stands for nerve to latissimus dorsi, which is also known as thoracodorsal. You can write in bracket thoracodorsal nerve. Nerve to latissimus dorsi. Then A stands for axillary nerve and R stands for radial nerve. इसमें रूट वैल्यू C5 C6 रहेगा छोटी नर्व्स का, लोअर अपर सबस्कैपुलर एंड एक्सिलरी रूट वैल्यू विल बी C5 C6. Then for radial it's C5 to T1 and for thoracodorsal it's C6 C7 C8 root value. ठीक है. So what are the branches of lateral cord? Musculocutaneous, lateral root of median nerve, lateral pectoral nerve. Now you should also should have an idea about कि कहाँ supply कर रही है. So musculocutaneous, you should know it is supplying muscles of anterior compartment of arm. अब anterior compartment की जो भी muscles है that you will study in the next class. ठीक है. And also it gives a cutaneous branch on the lateral side in the forearm. Then we have lateral pectoral, it supplies pectoralis major. Then we have lateral root of median which combines with the medial root, medial है ना, medial है, median नहीं है, medial root of the median nerve, last में n आता है. So medial root of the median and it will form median nerve. अब median nerve जो important nerve है, it supplies the plexus of the forearm, cutaneous supplies to the 3.5 lateral side, 3.5 palmar surface and also supplies thenar muscles. ठीक है. So important nerve for the anterior compartment of forearm. Flexors जो है forearm के, they are supplied by the median nerve. Median nerve also supplies thenar muscles. ये जो आपको elevation दिख रहा है, this is known as thenar and this is hypothenar. ऐसे palm रखोगे आप, तो thumb के नीचे जो ये elevation है, that is thenar. So thenar muscles are supplied by the median nerve. And also it gives cutaneous supplies to the lateral 3.5 part. So here. Then ulnar, medial part of this flexor. ठीक है. So जो medial flexor होंगी, that are supplied by the ulnar and medial 1.5 part of the palm and hypothenar muscles are supplied by the ulnar. Then the radial nerve, ये सब तो इंटीरियर की बात हो गई, तो पोस्टीरियर को भी कोई नर्व सप्लाई होगा या नहीं होगा? होगा. तो रेडियल नर्व का काम क्या है? जो पूरा पोस्टीरियर कंपार्टमेंट है आर्म का, फोर आर्म का, यानी कि एक्सटेंसर्स जो है, दे आर सप्लाइड बाय द रेडियल नर्व एंड ऑल्सो सप्लाइज द cutaneous supply to the hand dorsally. Radial nerve supplies the extensors of arm and forearm. What about axillary nerve? एक्सिला में किसको? मस्कुलेचर की बात हो रही है. एक्सिलरी नर्व का नाम एक्सिलरी क्यों है? एक्सिला में ऑब्वियसली इट इज गिवन ऑफ इन एक्सिला, बट यस डेल्टॉइड. डेल्टॉइड के साथ साथ इट ऑल्सो सप्लाइज टीरीज माइनर. कैन राइट इट डाउन, एमसीक्यू भी पूछते हैं. एक्सिलरी नर्व रूट वैल्यू C5 C6, इट गिव्स नर्व सप्लाई टू डेल्टॉइड. ये अभी लिख लोगे, देन आपको आगे रटने की जरूरत नहीं है. आगे देन यू विल रिकॉल दैट ये कहाँ से आ रही है. सो एक्सिलरी नर्व, डेल्टॉइड एंड टीरीज माइनर. अपर सबस्कैपुलर, लोअर सबस्कैपुलर, सबस्कैपुलरिस मसल. Lower subscapular also supplies teres major. Upper and lower subscapular
सबस्कैपुलर इसको तो कर ही नहीं है सप्लाई, और इनमें लोअर सबस्कैपुलर जो है इट ऑल्सो गिव नर्व सप्लाई टू टीरीज मेजर, thoracodorsal latissimus dorsi। बाकी मीडियल जो ब्रांचेस हमने पढ़ी है वो क्यूटेनियस हैं। मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म, मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म, मीडियल पेक्टोरल सप्लाईज मेजर एंड माइनर मसल, देन मीडियन रूट जो कि मीडियन नर्व बनाएंगी, और मीडियन नर्व जो है वो फ्लेक्सस को सप्लाई कर रही है फोर आर्म के। तो ये हो गया अपना नर्व डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस। समझ में आया इतना सबको? और ये फाइनल ब्रांचेस देखी है हमने, फाइनल ब्रांचेस ऑफ कॉर्ड्स। लेटरल कॉर्ड की क्या है, मीडियल कॉर्ड की क्या है, पोस्टीरियर कॉर्ड की क्या है। लेटरल कॉर्ड के लिए यू हैव टू यूज दी न्यूमोनिक एल एम एल, ओके। मीडियल कॉर्ड एम फॉर यू कैन रिमेम्बर, एंड फ्रॉम पोस्टीरियर कॉर्ड अल्लाह। दिस इज द मेन पिक्चर, कैसे ये फॉर्मेशन हो रहा है। अभी तक तो हम पिक्टोरियल डायग्राम देख रहे थे, ठीक है। स्पाइनल नर्व के इंटीरियर रेमस से फॉर्म होंगी, देन दे विल कंबाइन एंड फॉर्म ट्रंक्स, देन डिविजन्स, देन कॉर्ड्स एंड अगेन ब्रांचेस। Now course and relations, it runs in the neck region. First it runs above the clavicle, then behind, and then below the clavicle. So there will be infraclavicular and supraclavicular branches of the brachial plexus। और जो हम formations की बात कर रहे थे, medial root of the median nerve and lateral root of the median nerve, see this is axillary artery, this is pectoralis minor muscle which divides the axillary artery into three parts। Now this is the M I was talking about, कि ये दोनों कॉर्ड्स जो हैं इनके बीच में रन कर रहा है एक्सिलरी आर्टरी, ठीक है। और यहाँ से आपका आएगा लेटरल रूट ऑफ द मीडियन, इधर से आएगा मीडियन रूट ऑफ द मीडियन, एम फॉर्म करेगा एंड दे विल कंबाइन एंड फॉर्म मीडियन नर्व which will then lie anterior to the axillary artery। So these all structures will be in relation to each other in the axilla. All the branches and cords, they will be easily visible. Now what is the relation of a brachial plexus with the scalene muscles? If you have to locate it in the neck region, so it comes out in between these two muscles, scalenus anterior and scalenus medius muscle। scalenus anterior और medial के बीच में रन करती है brachial plexus। Now pictorial diagram of all the nerves made। ulnar nerve किससे आ रही है ulnar nerve? medial cord, radial nerve posterior cord, and median nerve lateral and medial cord। Basically these are the three main or the chief nerve supply of the upper limb। Yes, ulnar, median and radial nerve। Now branches of brachial plexus। Now we will start from the from the roots। roots से कौन सी branches आ रही हैं? dorsal scapular nerve which is derived from the C5 roots, dorsal scapular nerve। These are the motor roots to the rhomboidal major, minors and levator scapulae muscle। Directly they are coming from the roots। जब वो trunk form भी नहीं हुआ उससे पहले ही dorsal scapular। तो ये supraclavicular branch होंगी या infraclavicular? Supraclavicular। Long thoracic, you have heard the name। Long thoracic is the nerve supply to the serratus anterior muscle। nerve of Bell भी कहते हैं। injury to this nerve causes winging of scapula। so it is coming from all the three roots, C5, C6 and C7, long thoracic nerve। And there is important motor nerve of the diaphragm, phrenic nerve with root value of C3, C4, C5। It's an also important branch of this plexus, phrenic, and nerve to longus colli muscle। These all are the branches coming from the
Roots of the brachial plexus, dorsal, scapular, long thoracic, phrenic, and nerve to longus scoli. Now from the upper trunk, ये तो हमने किसकी बात करा, रूट्स का. अब ट्रंक से कौन कौन सी ब्रांचेस आ रही हैं, नर्व टू सबक्लेवियस मसल, अपर ट्रंक, suprascapular nerve, innervates supraspinatus and infraspinatus, and as the name suggests subclavius muscle किसको सप्लाई करेगा, नर्व टू सबक्लेवियस किसको सप्लाई करेगा, सबक्लेवियस मसल. सबक्लेवियस मसल भी हमने कहाँ देखा था, clavicle के नीचे, in the middle 1/3 part, in the inferior surface of the clavicle, coming from the first rib to the inferior surface, stabilizes the clavicle. So what are the branches of the roots? Dorsal scapular, long thoracic. Now you should be able to answer कि long thoracic कैसे form हो रहा है, from the roots of C5, C6, C7. ठीक है. Dorsal scapular, rhomboidus major minor, जब आप अभी बैक पढ़ोगे तब उसमें आएंगी सारी मसल्स, rhomboidus major minor, levator scapulis, उनकी सप्लाई जो है from the dorsal scapular coming from the root C5. Then phrenic C3, root value, it's also an important MCQ. What is the root value of phrenic nerve? क्योंकि phrenic जब आप बाद में पढ़ोगे तो you should be able, जब आप thorax region diaphragm तब पढ़ोगे तो you should be able to answer, it's coming from C3, C4 and C5. And from the upper tongue, branches are nerve to subclavius and suprascapular. Again, when suprascapular and subscapular nerve में हम कंफ्यूज हो जाते हैं, बट कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं. एज सुप्रा अपने आप नाम सजेस्ट कर रहा है कि सुप्रास्पाइनेटिस को तो करेगा ही, along with it also supplies infraspinatus, and as subscapular suggests, it will supply subscapularis muscle. Along with it, the lower subscapular will also supply teres major. तो आज जितना ये जो अगर तुमने पूरा डिलीजेंटली चार्ट बनाया है तो आपको एक मोटा मोटा आइडिया हो जाएगा कि कौन सी कंपार्टमेंट में कौन सी नर्व सप्लाई कर रही है, तो इसको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी. ये इसका मेन डायग्राम है जो आपको एग्जाम में पूछते हैं. ठीक है, तो अब इसमें भी कई वीडियोस हैं कि हाउ टू ड्रॉ ब्रेकियल प्लेक्सस इन 2 मिनट्स. तो इतना उसमें जाने की जरूरत नहीं है. आपको 3 ट्रंक्स बनाने हैं, डिविजन्स बनाना है, उनको कंबाइन करना है. So hardly it will take 2 minutes. तो इसमें कोई ट्रिक्स नहीं है. आपने जैसे भी आपने पढ़ा है उसको आपको ड्रॉ करना है. You can keep going through this. We have already discussed all these points. Now applied aspect. Now there are 2 important applied aspect. एक तो है अपना Erb's paralysis और एक है Klumpke's paralysis. ठीक है, पहले हम Erb's point डिस्कस कर लेते हैं. Erb's point जो है ये Erb points of neck, एक Erb's point एक और होता है. तो Erb's point in the neck, it's the point where 3 nerves are meeting. 6 nerves जो है वो एक पॉइंट पर यहाँ पे मिल रही हैं. इंटीरियर डिवीजन, पोस्टीरियर डिवीजन तो है ही ट्रंक का, अपर ट्रंक का. उसके अलावा हमने देखा कि ट्रंक की 2 ब्रांचेस हैं अपर ट्रंक की, सुप्रा स्कैपुलर एंड नर्व टू सबक्लेवियस. एंड आपस में भी ट्रंक फॉर्म करने के लिए दोनों रूट्स को मिलना पड़ेगा. सो C5 एंड C6 दे आर ऑल्सो मीटिंग ओवर हेयर. सो देयर इज अ पॉइंट where 6 points are meeting here in the neck region. That particular point is known as Erb's point. कौन सी nerves मिल रही हैं? So roots of C5, C6, suprascapular nerve to subclavius, which are the branches coming from the upper trunk, and again in the division, anterior and posterior division of the upper trunk. So this particular point is the Erb's point. Okay. Now injury to this point. Basically in the aberrant delivery, when there is separation of this neck region from the shoulder, ये अगर point injure हो जाता है, या there may be a fall on the shoulder. So when this point get injured, then it will lead to a paralysis which is known as Erb's paralysis. Now
because of the position, because the patient is not able to abduct. Okay, his hand is adducted, hanging by the side. Okay, and rotated, medially rotated, so that this position, it is like this. Okay, the palmar surface is upward like this, है ना? तो जब हेलमेट नहीं पहना होता है तो पुलिस वाले को 100 रुपए देने होते हैं, 50 रुपए, तो आप क्या करते हैं, पुलिस वाला ऐसे हाथ पीछे करता है और आप उसको पैसे टिप देते हो. So that is why this deformity is also known as policeman's tip deformity or waiter's tip deformity. ओके, तो इससे हमें याद रहेगा ये जो पर्टिकुलर पोजीशन है, और ये पोजीशन ऐसा क्यों होता है, बिकॉज ऑफ द डैमेज टू द बाइसेप्स ब्रेकियाई, ब्रेकियोरेडियालिस मसल्स, डेल्टॉइड मसल्स, एंड ऑल्सो देयर इज एब्सेंस ऑफ सुपिनेटर एंड बाइसेप जर्क्स. जर्क्स क्या है, हम जब हैमर अप्लाई करते हैं यहाँ पे और हाथ रखते हैं बाइसेप्स के ऊपर, देन देयर इज again a reflex in the form of flexion of the muscle, that is known as bicep jerk. So bicep jerk is not there in the Erb's paralysis, it is absent. So biceps and supinator jerk is absent in the Erb's paralysis. So Erb's point समझ में आया आपको? It is a meeting point. This particular diagram you should know, it's a meeting point of the 6 nerves. अगर यहाँ injury होगा, it will lead to a particular deformity which is known as policeman's tip deformity. ठीक है, this extended arm is extended, then this forearm is also extended and rotated like this. Most important जो इसका etiology है, it is birth injury. Arms hang by the side, rotated medially, forearm pronated and extended. There is loss of bicep jerk, supinator jerk, and flexed wrist and fingers. तभी तो टिप दे पाओगे ना, ऐसे फ्लेक्स रहेगा तो हाथ में कैसे अटकेगा, है ना? So this particular deformity is also known as waiter's tip or the policeman's tip deformity. Muscles injured are deltoid, supraspinatus, infraspinatus, biceps, brachialis, and also brachioradialis. समझ में आया सबको? पहले you should know the cause, you should know the point where it is, and then you should know the particular point. इसमें एक चीज नहीं लिखा है, that is jerks. ठीक है, रिफ्लेक्स नहीं आएगा इसमें, बाइसेप जर्क इज एब्सेंट. एक सुपिनेटर जर्क है, अगर हम हैमर करते हैं तो सुपिनेटर जर्क भी एब्सेंट रहेगा. सो जर्क्स आर एब्सेंट. सो बेसिकली जो रूट इन्वॉल्व है यहाँ पे वो कौन सी है, C5 एंड C6. बहुत टाइम है हमारे पास, मैं आराम से. नेक्स्ट वन इज क्लम के पैरालिसिस. इसका मेन जो पिक्चर है वो ये है, क्लॉ हैंड. ठीक है, इसमें क्या है, मेटाकार्पो जो फेरिंजियल जॉइंट्स हैं ये तो एक्सटेंडेड है, एंड इंटरफेरिंजियल जॉइंट्स जो है वो फ्लेक्स्ड हैं इस तरीके से. दिस पर्टिकुलर डिफॉर्मिटी इज क्लम्पकेस पैरालिसिस. अब यहाँ पे सो अर्ब्स जो था, that was the deformity of the upper trunk of the brachial plexus, and this is the deformity of the lower trunk of the brachial plexus. Root values involved है C8 T1, mostly T1 is involved. Intrinsic muscles of the hands are affected. Long flexors of the hand get paralyzed. So long flexors हैं, they will get paralyzed. So there is unopposed actions of the flexors and extensors of the hand muscles. Now claw hand means extension at the MPJ, metacarpopharyngeal joint, and flexion at the IPJ. IPJ means interpharyngeal joint. ठीक है? Now cervical rib can cause paralysis similar to clump case paralysis with post fixed T2 contribution. बेसिकली रिब्स जो है वो 12 रिब्स होती है, 1 से स्टार्ट होता है, पर नेक रीजन में समटाइम्स देयर इज एन एक्स्ट्रा रिब व्हिच इज नोन एज सर्वाइकल रिब.
और बिकॉज नेक रीजन में ब्रेकियल प्लेक्सस जो है वो रन कर रहा है, रूट्स जो है, तो देयर में भी चांसेस कि स्केलिन मसल्स और सर्वाइकल रिब के बीच में जो ब्रेकियल प्लेक्सस गेट कंप्रेस, so the result will be same as that of the clump case paralysis. Okay, so there will be claw hand in that case as well. Now there are also other points, यहाँ तो बहुत कम points लिखे हैं, ठीक है। आप इसमें अब ये क्यों हो रहा है, बिकॉज फ्लेक्सर्स जो है हैंड्स के और एक्सटेंसर्स है उनके अनअपोज काम हो रहा है, तो यहाँ वाला जो ये लंब्राइकल्स जो है उनकी वजह से तो एक्सटेंशन हो रहा है और यहाँ फ्लेक्सर्स की वजह से फ्लेक्शन हो रहा है, ठीक है, क्योंकि इनमें आगे क्या जो ये काम नहीं कर रहा है, इसमें एक्सटेंसर्स काम नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे फ्लेक्सर्स काम नहीं कर रहे हैं, ये डिफॉर्मिटी रहेगी, ठीक है। उसके अलावा और क्या रहेगा, व्हाट विल बी द ट्रॉफिक चेंजेस। ट्रॉफिक चेंजेस का मतलब क्या है कि स्किन जो है वो ड्राई रहेगा, स्केली रहेगा, ड्राई स्केली स्किन रहेगा, ठीक है। ड्राई क्यों रहेगा, क्योंकि सिंपैथेटिक एक्टिविटी नहीं हो रहा है, स्वेटिंग नहीं हो रहा है, तो ड्राई स्किन रहेगा, ठीक है। अब ये कहाँ से आया, स्पाइनल कॉर्ड नर्वस सिस्टम में आपने देखा था, तो लेटरल हॉर्न भी बताए थे सर ने, नहीं बताए, आपने पढ़े नहीं, चलो आगे भी अभी हम बहुत पढ़ेंगे, अभी पूरा स्पाइनल कॉर्ड फिर से। So they are basically for the sympathetic activity lateral horns are there, ठीक है। जो lateral horn जो है वो अपने sympathetic fibers देते हैं, they runs here along with these nerves, T1 के साथ में, T2 के साथ में, तो T1 से लेके T4 तक जो है वो पूरा इसके अंदर रन करते। तो लेट्स गो अगेन थोड़ा और ऊपर, पैरासिम्पैथेटिक एंड सिम्पैथेटिक, ठीक है। पैरासिम्पैथेटिक इज क्रेनियोसैक्रल आउटफ्लो, यानी कि यहाँ पे जो कंट्रीब्यूशन आ रहा है दैट इज कमिंग फ्रॉम द क्रेनियल नर्व एंड द सैक्रल नर्व, ठीक है। एंड हियर सिम्पैथेटिक जो है इट इज thoracolumbar outflow, दैट मीन्स कंट्रीब्यूशन इज कमिंग फ्रॉम द thorax and the lumbar segment of the spinal cord, okay। so यानी कि जो जिस thoracic segment है वहां से हमें क्या contributing factors मिल रहे हैं, sympathetic fibers जो हैं they are contributing। so have you read ventral ramus के अंदर grey ramus and white ramus पढ़ा आप लोगों ने? you have to again go and study कि white ramus के अंदर कौन से fibers है and grey ramus में कौन से हैं। white ramus के अंदर preganglionic sympathetic fibers है, grey ramus के अंदर पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक फाइबर्स है। तो क्योंकि T1 भी डैमेज हो रहा है तो सिंपैथेटिक फाइबर्स भी डैमेज होंगे। तो सिंपैथेटिक फाइबर्स जो कि डैमेज हो रहे हैं थोरैसिक गैंग्लियन के लिए जा रहे हैं जो कि हेड एंड नेक को सप्लाई करेंगे, तो वो भी डैमेज हो रहे हैं। इस वजह से एक एड ऑन सिंड्रोम भी होता है यहाँ पे, वो है हॉर्नर सिंड्रोम। तो कि हमें यहाँ तक पहुंचना था कि ये हॉर्नर सिंड्रोम क्या होता है, बिकॉज ऑफ द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द sympathetic fibers running along with the T1, ठीक है, white ramus में अगर वहां पे इंजर हो गया है तो that it will also cause Horner syndromes। There are three important signs of this: ptosis, meiosis and hydrosis। ptosis, meiosis and anhydrosis। What is ptosis, what is meiosis and what is anhydrosis, ये आप लोग पता लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क कर दो, आई विल आस्क यू इन DH। ptosis, meiosis, anhydrosis ऐसे आपको याद रहेगा। एंड उसके अलावा और क्या चेंजेस हो सकते हैं, बिकॉज ऑफ द vasodilation, अगेन बिकॉज ऑफ द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द sympathetic fibers, there may be redness over here। so redness, dry scaly skin, claw hand, these and Horner syndromes, these all are clinical features of clump के paralysis, ठीक है, समझ में आया सबको? So with this we complete today's topic, brachial plexus। Quick 2-minute revision, attendance आपका हो चुका है। सबसे पहले brachial plexus कहाँ से arise कर रहा है? C5 तो है, पर C5 क्या है? रूट्स किसकी है? वेंट्रल रेमाई किसका? स्पाइनल कॉर्ड का।
Yes, anterior primary rami of स्पाइनल नर्व. तो विच स्पाइनल? C5 सी सेगमेंट, वो स्पाइनल नर्व है, ठीक है, रूट्स नहीं बोलना आपको. यू हैव टू से anterior primary rami or ventral primary rami of spinal nerve C5 to T1, contributing in the formation of brachial plexus. So they contribute to form the roots C5, C6, C7, C8, T1. These roots C5, C6 combine and form upper trunk, then C7 form the middle trunk, and C8 and T1 combine and form lower trunk. So there are three trunks: upper, middle and lower trunk. Again, all these trunks are divided into anterior and posterior division. Anterior division of upper and middle trunk forms lateral cord. Then anterior division of this trunk forms medial cord. Posterior division of upper, middle and lower posterior cord. Now what are the final branches? What are the branches of lateral cord of brachial plexus? Musculocutaneous nerve, lateral pectoral, lateral root of median nerve. You can learn it with the mnemonic LML. Musculocutaneous कैट कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होगा इसका सप्लाई? Anterior compartment of arm. Then lateral pectoral region, and then lateral root of median nerve form करेगी. Then we have medial cord branches, cutaneous. So medial cutaneous nerve of arm, forearm, medial root of the median and medial pectoral. So इन सब का डिस्ट्रीब्यूशन इनके नाम से ही समझ में आ रहा है. And the last is ulnar, medial part of the forearm and hypothenar muscles and intrinsic muscles of the hand. Then posterior cord, mnemonic ulnar, upper, lower, then axillary and radial. Upper and lower subscapular will supply. Lower subscapular is thoracodorsal. Then axillary, very good, deltoid and teres minor. Last, radial, extensors of arm, forearms, cutaneous. Very good. Thickest nerve of brachial plexus, radial nerve. Branches of roots of brachial plexus, any one or two branches. Dorsal scapular, long thoracic, you have to remember that. Root value C5, C6, C7. Branches from the upper trunk, nerve to subclavius and suprascapular. Suprascapular, supraspinatus and infraspinatus. What is Erb's paralysis? What is Erb's point? तो 6 नर्व कौन सी है वो पता होना चाहिए, डायग्राम आना चाहिए. देन इसके क्लिनिकल फीचर्स, व्हाट आर द मसल्स अफेक्टेड, ठीक है. तो बेसिकली कौन सी मूवमेंट नहीं हो रही है इसमें? ये जैसे अब ऐसे हैंड है, आपने मूवमेंट्स पढ़ी हैं, तो कौन सी मूवमेंट नहीं हो रही है? फ्लेक्शन नहीं हो रहा है, एब्डक्शन नहीं हो रहा है, लेटरल रोटेशन भी नहीं हो पा रहा है, ठीक है. So this absence of abduction, lateral rotation and flexion. This deformity is also known as policeman step deformity. Klumpke paralysis is also known as claws hand. So ये याद रखना है, Erb's paralysis is the injury to the upper trunk and Klumpke's paralysis is because of injury to the lower trunk. Lower trunk में भी basically T1 is involved.
ठीक है, उसके अंदर भी यू हैव टू रिमेम्बर ये हॉर्नर्स क्यों आया है बीच में, बिकॉज ऑफ द इन्वॉल्वमेंट ऑफ सिंपैथेटिक फाइबर्स। उसके अलावा और चीजें तो हैं ही, एक्सटेंशन एट दी मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट एंड फ्लेक्शन एट दी इंटरफेरेंजियल जॉइंट। ओके।